Graph, graph. Okay, we're live now. Let's play some songs. अभी इंग्लिश में बात करने वाला हूँ खुद से. Okay. So we have a bunch of functions that we have declared, but we have yet to implement them. So let's get started with that. Logger.debug, and always make sure to debug whenever possible. Sorry, add a logger whenever possible, because you might not appreciate it right now, but as you keep on coding and your code base gets a lot bigger, debugging becomes a lot easier. So try to debug log as much as possible. User. Okay, that's it. Let's do this. Okay, so we have done this. Oh, we need a repository. Hmm. We have to specify that we are injecting this repository. And that's gonna be it. We don't need any other services for now because it's kinda everything is internal. So that's what we're gonna do right now. So stalking, right? So whenever somebody is stalking, oh my gosh, actually old as fuck song आया. Add this. If already stalking, no, we don't want to do anything. Hmm. Stalker. Okay, let's make a
Let's make a private function. Repo.find by user ID. Stalker count. Increment stalker count. Stalker count stalked.
This should be transactional, not gonna lie. I wonder if that's a thing. Okay. We're running out of things that make us wanna last forever. A burden that can never ever ruin all the laughter. Tell me why you've been leaving me home when you're out late. This happy ever after makes me wanna chase her down. Tell me why you've been staying out late when I'm all alone. 'Cause I'm lonely in touch with my feelings, but not when you're down. Why won't you just stay for a moment? I don't want to be this way. Tell me why you've been staying up late when I'm all alone. 'Cause I'm lonely in touch with my feelings, but not when you're down. Tell me why you've been staying out late when I'm all alone. 'Cause I'm lonely in touch with my feelings, but not when you're down. Why won't you just stay for a moment? I don't want to be this way. Tell me why you've been staying up late when I'm all alone. 'Cause I'm lonely in touch with my feelings, but not when you're down. Let's think about the stable. Yet he stalked. Stalker stalked.
Yeah, we don't need any interdependency. Get every select star. Get the stalker. String. Stalker is equals to stalker is equals to okay. Yeah, we can do that. Pretty simple. Okay, what if the K is dead? Just gotta go back to paint or something. No, we'll just open up Notepad. Not this one. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. And Cuckoo is also stalking. Let's say legit, right? And let's say focus is stalking Bridget now. So we can get what were the people focus is stalking. So like so we're stalking this we're stalking focus. We're stalking. Mm. So we can do this. So if I would tell to start, okay, this is gonna be like this. Okay. So okay, so cuckoo start focus. So circle count of cuckoo. Stalker count. Stalker. Stalker. How many people? Mm. Stalking. I think it should be called stalking. It's a stalker count. Okay, let's set it to 0 by default. So if I cuckoo is stalker and this is the one that's getting stalked, stalker, right? Because no stalker, but focuses is stalker now. And then stalking in case of stalking. Let's see what this looks like. Action. Check if already is stalking. And stalker. Okay. I think it's good enough. Delete where the
Should be in the start though. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for you, for you, for Stalker ne? Hmm. Stalking count. So stalking count is gonna be this, stalker count, stalker. Okay. Found is gonna be this. Then we have
to a time where we were young and free. We used to laugh and run, chasing dreams in the sun. But now those days are gone, just echoes in my mind. And I'm swimming in this fading echoes, lost in the whispers of what used to be. I hold them in my heart forever, but in reality, they're slipping away from me. 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 In the quiet of the night, I hear your voice, echoes of laughter and this, were our first choice. The memories we make can never be replaced, but they're slipping through my fingers like sand on the shore. To live without regret, to embrace each day, but now those lovely memories fade. And I'm swimming in this fading echoes, lost in the whispers of what used to be. I hold them in my heart forever, but in reality, they're slipping away from me.
think we have to check this one manually. What it's doing under the hood. Far away, made mistakes, left our hearts in this place. I pray for rain to wash the pain, but the cut is still deep. It's been 24 hours and we can't sleep. Up till next morning and we don't speak. Are you giving up? Am I leaving us? Just wanted to say, if you find somebody else, I'd still wish you well, but I'll be drowning down in hell. If you love somebody new, all my days are rude. Watch me burn right down in hell. It's us, so move on. Uh-huh. Hello, hello, hello. I think you must be muted. Mhm, mhm, mhm. Can't hear you. तुम्हारा माइक का आइकॉन भी हिल नहीं रहा. Hello, hello, hello. 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 The fuck the boosted. हाँ भी आया. What? Your favorite streamer? Why? टकला करके. What the fuck? Hello, hello. तुम्हारा वॉइस आ रहा था वैसे.
Ugh, ready to sink. Mm. Hello, 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 hello. तुम्हारा voice. Bandwidth Patrol has asked me to disconnect you to save bandwidth. Hello, 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 hello. Still cannot hear you. हेलो हेलो हाँ अभी आया. व्हाट द क्या बूस्टेड हुआ? है क्या सर? हाँ बुस्टेड तो है बट ना रख दो, मैं वो कर दूंगा, डिक्रीज कर दूंगा, मैंने 200 पे रखा था. एक सेकंड मैं वो करता हूँ, इसको थोड़ा फिक्स करता हूँ. ठीक है.
We have to make this a wait. Sorry, async. Yeah, so there's a worker thread. Yeah, although it's single हेलो. threaded. हाँ, आ रहा है अभी. ज़्यादा रह क्या? ना ठीक ही है. Find, तो find and count. स्टैटिक नॉइस आ रहा है क्या? Static noise ना तो ठीक ही है. ठीक है फिर. Mm. अच्छा, ये डिलीट पोस्ट ये तो होगा ना? डिलीट का आई थिंक व्हेयर वाला यूज करना थोड़ा बेटर होगा. एक हाँ. डिलीट का है जहाँ पे तुम लाइक वो दे सकते हो. कर्ली ब्रेसेस देने से व्हेयर का ऑप्शन आता है. तो फिर वहाँ पे तुम पोस्ट आईडी करके स्पेसिफाई आई थिंक ये भी काम कर जाएगा बट ट्राई करके देखना. मेनली तो वो है टेस्ट करना होगा. दिस वर्क्स देन दिस वर्क्स. ठीक है. फक, ये कब किया मैंने. ये तो है. अच्छा टेक. फकिंग हेल, की रिटार्ड को था भाई. स्टॉकिंग ना, स्टॉकिंग किसको स्टॉकर कर रहा हूँ. स्टॉकर यूजर आईडी. ओके. Stalking account user ID is going to be um, stalking, stalker, get stalkers. Hmm.
Find one by okay. Turn stalker dot stalker count. Okay, I think that's gonna be it. Yeah, functionalities are done. Now we gotta test this thing out. Implement it. Okay, wow. ये भी हो गया. Now what we're gonna do is write some tests. Oh my gosh, ये सबसे boring लगता है मुझे. क्या करूं? भाई क्या बोरिंग है टेस्ट लिखना. हाँ. साला अच्छा रुक टेस्ट थोड़ा छोड़ दो. Let me just create the tables. जितना डिले कर सकूं करता हूँ. Whoa, ooh. Ah, okay. So we have users. We now need two more tables. It's going to be what is this? Stalk and stalk count. अच्छा. अरे एक एक्स्ट्रा रिकॉर्ड ऐड करना भूल गया. डेट देना होगा. At um at okay. ये क्या था इसका? Stalk is going to have a stalker. This is going to be varchar. This is going to be a primary key. Stalked. आई थिंक मेरा भी हो गया. Oh yeah. फक. अभी अरे टेस्ट टेस्ट. लिखना पड़ेगा. हाँ. तुम्हारा वो कर दे इससे पहले. टेबल. नियॉन. हाँ. At. He is hiding. अरे भाई मेरा डीटीओ यूज ही नहीं किया. डायरेक्ट वो रिटर्न किया. क्या बोलूं? ऑन द स्पॉट पे बना सकते हैं ना. हम्म. वो कर दिया. I don't think we need any constraints, but we do need index. Let's call this stalker. Stalker method column stalker को कर देंगे constraint. Nah. And then the other one is going to be stalked. टेस्ट. Okay, I think that is going to be good for now. The fuck? What do you mean multiple primary keys are not allowed? Hey retard fuck. इससे अच्छा तो मैं ही कर दूंगा. ओह नो. मैं तो अनलिस्टेड स्ट्रीम कर रहा हूँ शायद. ओह. नेवर माइंड. प्राइवेट. इट्स Wow, ओके. और भी इट्स डेंजर है. ओके. Uh, nah, you know what? इस टेबल पे प्राइमरी की दूंगा ही नहीं.
बिना प्राइमरी की कर सिर्फ इंडेक्स यूज करेंगे डायरेक्ट, थोड़ा बॉल सी बनते. We'll just add a constraint to date. Yeah, to specify cannot be null, and this cannot be null. This also cannot be null. Okay, and the constraint, unique constraint. Oh, कर सकते हो तो primary index idx stalk. Okay, review and create. Done. Nice. तुम्हारा पे तो पोस्ट का क्या था? You don't need to index anything, I think. आईडी से ही चल जाएगा. बाद में जब सर्च का फीचर वो करेंगे ना, तब हम्म. तब oh no, पब्लिक पे किया. Oh my gosh. Oh my gosh. मासूदा. Fuck. Wrong जगह पे कर दिया. Make sure to set the schema to Anonymask, okay? Sure. मैंने public schema पे कर दिया. Fuck. यार, can I copy this? Or can I just Schema to Anonymask? इसका schema change करना होगा. Public कर देना होगा. दूर बड़ा. या फिर सब चीज public पे कर दे क्या? What do you say? या फिर तुम already कर चुके चीज कौन सा? तुम्हारा मैंने टेबल? किया नहीं अभी तक कुछ. तो फिर पब्लिक पे कर दे. यूजर को पब्लिक पे शिफ्ट कर लेंगे. ठीक है. बिकॉज काइंड ऑफ डिफॉल्ट पब्लिक भी. सो इतना इश्यूज होने का प्रॉब्लम नहीं है. string, this is going to be a primary key varchar, and then okay, ये होगा stalker count, big int. Okay, okay, and then stalking count, कितना stall कर रहे हैं, कितना वो है, big int. Okay, no index is required. Stall count. Okay, good shit. Now we have our tables, we have this. Anonymask तो है users को, और ID and username है बस. ये तो काफी सिंपल है. वो एनोनिमस पे बनाओ ना. ये पब्लिक पे कर दे. पब्लिक. हाँ, पब्लिक. अच्छा. एनोनिमस पब्लिक क्रिएट टेबल. क्या था हमारा यूजर, राइट? ओके, यूजर्स. ओके, यूजर्स इसको पब्लिक कर रहा हूँ मैं. यूजर्स को भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है? हम्म. चला, दिस इज आईडी. ओह नो, अभी तो मेरा भी ओसीडी हो रहा है. वो मेरा आईडी और उसका प्लेसमेंट देख के. string, this is going to be a primary key, the username, valid time, unique, not null. Okay, default कुछ नहीं है. We don't need anything else. I think we're good to go.
Okay, good. Hmm, okay, good. मेरा कर दिया. Oh fuck, अभी टेस्ट लिख रहा हूँ. Tests. Hmm. I wanna be next to you. Ooh. Okay. Mm-mm-mm. Stalk doll spec dot yes. Okay, there we go. Describe stalk integration टेस्ट में तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन टेस्ट करने वाला हूँ. यूनिट टेस्ट नहीं करूंगा. डेटाबेस के साथ काम कर रहे क्या डायरेक्ट चेक कर लूंगा. तुम भी यही कर लेना, अच्छा होगा. ठीक है. कॉलम टाइटल ट्रीटेड. नॉट नल देने से नलेबल नहीं होगा ना? हाँ, फोर्स हो जाएगा टू बी नलेबल. ओए, टू नॉट बी नलेबल. अच्छा. टाइम स्टैम्प कैन बी नलेबल एंड कंटेंट भी नलेबल कर दूं क्या? कंटेंट सबको नलेबल कर दे. ओए सॉरी, नॉन नलेबल मतलब सबको होना पड़ेगा. अपडेटेड तो नॉन नलेबल है. अपडेटेड को नलेबल कर दे. हाँ, बस उसको नलेबल, बाकी सब नॉन नलेबल. मतलब सब एग्जिस्ट करना पड़ेगा, बस अपडेटेड एक वो होगा. हम्म. टेबल का नाम उससे करो क्या? पैस्कल करो कि कैमल केस करो? और स्नेक केस. अच्छा. तुम पैस्कल करने या फिर वो सब करने से भी ऑटोमेटिक वो हो जाता है लोअर. सो कंफ्यूजिंग हो जाता है. तो फिर स्नेक यूज कर लेना, कंसिस्टेंट रहेगा. मेरा स्टॉल काउंटर को भी यही दिया, स्टॉल अंडरस्कोर काउंटर. ठीक ओके. है. पोस्ट आईडी को भी पोस्ट अंडरस्कोर. ओ हाँ, हाँ, वेरिएबल नेम्स को भी सब लोअर केस एंड कैमल केस यूज करना. मैं बोलना भूल गया. ठीक है. पोस्ट हम्म, को रिव्यू एंड क्रिएट. क्या ही करना था. टाइप ORM module dot for feature. What feature are we gonna use? Stalk entity. क्या दिया था नाम? Stalk. अच्छा, stalk दिया था. Stalk, comma, counter. I think इस entity लिखना चाहिए. ओ माय गॉड. I wanna ओ be नो. next. Oh, what the hell? आईडी इज अ varchar not null primary key.
I wanna be next to you. Ah. मैं एनवायरनमेंट का जो नेम्स है वो भी चेंज कर दूंगा आई मीन प्लेसमेंट्स नेम स्पेस यूज करके बेटर होगा ठीक है। बाद में वो yeah so stock service is there we are also importing our entities okay we also have access to our repositories inject repository use करके where's our class yes okay हमने caching तो implement नहीं किया करना होगा like मेन फीचर्स होने के बाद कर देंगे कंटेंट टेक्स्ट की वार्चर दो। the fuck कौन सा ज्यादा स्टोर कर सकता है वैसे नॉर्मली तो लोग उधर पे स्टोर करते कहा क्या बोलते हैं उसको एक स्टोरेज सिस्टम पे बट या आई गेस विल स्टोर इट एज अ ज्यादा साइज किसका है टेक्स्ट का होगा ना तो तो देख लेना वैसे हम और एल्स वी कैन डू वन थिंग we can specify a fixed number of letters like varchar देके 500 length तक 500 is too और less what do you think 1000 हम्म 1000 दे देते ठीक है। okay now time to go to our tests टेस्ट में भूल जाता हूँ बार बार मॉड्यूल कैसे सेटअप करते हैं देखना पड़ता है एग्जिस्टिंग टेस्ट्स before all what do we do before everything is set up पोस्ट का हुआ क्या देखना थोड़ा। टेबल हम्म ठीक है post id varchar blah 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 title created updated content varchar not null इसका साइज दिया ना varchar का साइज तो नहीं दिया। अच्छा ओह शिट। साइज वो कर दे दे देना लेंथ करके एक होगा फील्ड जब कोड करते तब तो ब्रैकेट पे दे देते इधर पे दे सकते लेंथ पे लेट्स मेक इट 1000 ऑल्टर टेबल। ऑल्टर करके लेंथ को 1000 कर देना डेटा टाइप्स कॉन्स्ट्रेंट्स कहाँ पे। कंस्ट्रक्ट डेटा टाइप पे varchar सेलेक्ट करना और ओ लेंथ होगा देख इधर पे दे देना कितना दो। 1000 ठीक sounds है। good providers क्या प्रोवाइड करेगा config service my gosh this is so fucking confusing मेरा यूजर टेस्ट कहाँ पर है patient test हाँ इसको साइड बाय साइड रख देता हूँ थोड़ा बिग मॉनिटर का यूज उठाता हूँ imports अच्छा so we are actually gonna get user service this is gonna get provided to us and we're gonna do a compile here compile okay oh wait for root okay we don't need anything else await and then what do we do type orm module dot for root async
Imports क्या import करें config module in a config module and क्या चाहिए inject, yeah, we need an inject config service, and once those things are done we can use a factory to set our setup. It's going to be an async function, and we need access to our environment variable service. Okay, and then return type is going to be postgres host. ये सब कॉपी कर लेता हूँ. The fuck, इधर पे मैंने हार्ड कोड करके रखा. Entities, ये भी auto load entities. Okay, so now we have access to everything that we need. Perfecto. So what we can do is service is equals to module dot get, and what we want to get is service impl. Okay. db is equals to going to be module dot get, and what we want to get is our क्या था भूल गया रे क्या बोलते हैं इसको data source dot get repository, and the type of repository we want is going to be acha, you know what, no, leave it, let's sit in though, because we are gonna need both kind of. Fuck. Wow. Mm. The initial test is going to be if we can connect to the database. Connect, should connect to database. Before each, what we want to do is I'm the best, I'm the best, I'm the best. Oh, I am the best. Oh my gosh. No tests found? What do you mean, bro? There is one test. Literally इधर पे है एक साला. We take the test. Should start stalking. वो टेस्ट वाला एनवायरनमेंट से करूँ क्या? ना मैं खुद वो कर रहा हूँ एक्चुअल वाले पे. So environment file .env. डॉट यहाँ डॉट env पे जो है, ठीक है. और तुम्हारा टेस्ट तुम्हारा मॉड्यूल के अंदर ही रख देना post डॉट spec डॉट ts करके. Oh no, मॉड्यूल के अंदर. हाँ, मतलब ये लोग वही अच्छा, फॉलो कर रहे हैं, तो फिर हम भी यही करते हैं. मैंने तो डीटीओ नहीं इंटरनल्स पे बनाया. ना. इंटरनल को बाहर ही रख दे, मॉड्यूल के लेवल पे ही रख दे, नो प्रॉब्लम. ठीक है.
टेस्ट करके रखूँ क्या हम्म, फोल्डर, या फिर बस वो फाइल? ना, हाँ बस फाइल लगा दे। मॉड्यूल का नाम डॉट स्पैक करके, ओके आई gotta make some DTOs first, the DTO बनाया ही नहीं। Pretty much the same though, entities की जैसा ही होगा। So I'm gonna copy, I'm gonna paste, get rid of this, get rid of this, get rid of this, there, 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 there. Okay, stalk, DTO, counter, DTO. Okay, and okay, so now we gotta make some changes. Mm-mm. Stalk DTO. Okay, let's go to service and change our return values. Get stalker. To be honest, इधर पे तो चाहिए भी नहीं DTOs, what the fuck, literal values मिल जाता है, बहुत सिंपल है What ना। do you mean no test case found? ऐसे एक खाली टेस्ट केस दे के दिया क्या? नहीं, नो टेस्ट फाउंड बोले भाई, इसको वो करना पड़ेगा क्या? मेरा भी वही है, नो टेस्ट फाउंड, बट आई थिंक अच्छा, इट, वो उसमें ट्राई करता हुआ हाँ उधर पे टेस्ट चलने में। से भाई, तो फिर चेंज करना होगा हमें, हाँ। या फिर हाँ वो कर देंगे, चैट जीपीटी से पूछ लेंगे हेल्प करके, ब्रो हेल्प करके। बिकॉज हाँ वैसे लाइक खुद का मॉड्यूल के अंदर टेस्ट होने से ज़्यादा इधर उधर जाना नहीं पड़ता। तो फक। इधर पे भी है ना। मैंने वो किया था ना, मूव किया था ना, उससे मेरा फक अप हो गया वो इंपोर्ट्स। ओह शिट। व्हाट यू मीन? क्वेरी फेल्ड, रिलेशन पोस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, मैंने पोस्ट दिया था। अच्छा, फक। पोस्ट मॉड्यूल पोस्ट डोमेन पोस्ट। अच्छा। मैं तो सभी को ट्राई कैच पे घुसाना भूल गया। द फक। Relation anonymask dot post does not exist. Oh no. ओह, तुमने स्कीमा चेंज किया? कीमा चेंज मिनट, का मतलब? तुम्हारा पोस्ट पे एंटिटी जब डिक्लेयर किया ना, हम्म। एंटिटी पे तो नेम एंड Oh fuck, पोस्ट, entity. हाँ Yeah. उधर पे आई थिंक चेंज नहीं किया, इट्स पॉइंटिंग टू एनोनिमास्क स्कीमा। पब्लिक होगा ना? हाँ पब्लिक हो जाएगा।
3 passed, 1 failed. हाँ, get post by ID should return null if does not post. अच्छा, थ्रो नहीं करके नल रिटर्न कर देता हूँ. Hmm, थिंक सब पे कैच लगा दिया. Update. Accept this update. Yeah. Error catch. To all function. Ooh. Oh my gosh. अब टेस्ट लिखो साला. अच्छा टेस्ट वहां पे देने से काम करता है ऐसा है क्या? हाँ, वहाँ पे डायरेक्टरी ऐड करना पड़ेगा उसमें. अच्छा. जस्ट डॉट कहाँ पे है वंडर? जेसन पे है क्या? या कोई नहीं, अभी के लिए इधर पे ही बना देता हूँ. स्टॉक. पास कर लिया सब. वो या मैं तो अभी लिखूंगा. नेस्कल रिजॉल्व डिपेंडेंसी यूजर सर्विस इम्पल. इंजेक्टेबल नहीं किया क्या मैंने इसको? ओह. वेट, मैं इंजेक्टेबल नहीं. अपडेट नहीं कर रहा हूँ क्या? अपडेट करके void दे रहा हूँ ना. I अच्छा. can't really test that. कौन सा? अपडेट. अपडेट. हम्म. अपडेट टेस्ट करने के लिए उसका रिटर्न तो कुछ होगा नहीं आई थिंक, बस ट्रू फॉल्स या फिर नल. ट्रू फॉल्स तो नहीं है. तो फिर क्या void रिटर्न दिया कर रहे हो? मैंने. अच्छा रिटर्न टाइप है ना. कोई ना. तो फिर अपडेट करने के बाद तुम्हारा रिपोजिटरी यूज करके चेक करना अपडेट हुआ क्या. ठीक है. एक मेरा यूजर वाला देख लेना, वहाँ पे एक डेटा सोर्स करके एक है which gives you access to the what do you call that data source. तो उसको डेटा सोर्स डॉट वो कर सकते हो, गेट रिपोजिटरी फिर टाइप स्पेसिफाई करके यू कैन फाइंड इट. अच्छा. ये मेरा क्या प्रॉब्लम हो रहा है? नेट रिजॉल्व यूजर सर्विस इम्पल. प्लीज मेक श्योर योर रिपोजिटरी यूजर रिपोजिटरी द फक. इसका क्या प्रॉब्लम है? Acha, you know what? I'm just gonna import the entity that I need. It's gonna be okay. User service impl. कहाँ पे भाई, मैं कहाँ पे यूज कर रहा हूँ? Oh my gosh, are you fucking shitting me? मार खाएगा या मार खाएगा. I should really return the updated post. Uh, save post. DTO.
Sure, man. Stock entity, stock entity repository. It exists करता है, but this one doesn't exist. But why? Didn't I mark this as entity? Public stock. Hmm. Set किया क्या providers पे मैंने? I should have, but I'm gonna check it again. अच्छा, for feature किया क्या मैंने? I don't think I did. Cannot connect to database. I wonder why. Ah, big int का कुछ problem है. ऐसा क्या था? Oh, unsigned. It's not supported by Postgres. क्या retarded है? थूर बड़ा थू. तो फिर इसको signed ही रखना होगा. क्या सेंस नहीं करता भाई. थोड़ा और भी रेंज आ जाता. Hmm. Big int, big int. हाँ, अभी connect हो रहा है. I'll write my tests now. Oh my gosh. Uh, let me see what tests do I do. क्या करना चाहिए? मेरा क्या क्या functions है देख लेता हूँ. Okay, so the first test is going to be should start stalking. Okay, start stalking, huh? So service dot stalker stalking. That's it, right? Is equals to async. Let's make it a sync. So this is gonna stalk this person and expect result to be true. Okay, that should be the first. Let's see if this works. The fuck. अच्छा, अरे ऐड तो दिया नहीं हमने. अरे हाँ, न्यू वैल्यू दिया था मैंने. So stalk जब करते हैं, we have to add a new value. It's going to be our at new date. Okay. The date constructor creates date object. Current time. अच्छा, current time ही तो देता है. Then why am I doing date dot now? Okay. Expect. Uh, चलना. तो फिर this dot db. Sorry. db dot get repository. This is gonna be what is this thing called? Stalker count और वो दोनों update होने चाहिए ना. So what I'm expecting is mm, 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 stalk entity.
What do you mean type prototype? The fuck, are you retarded or what? Hmm. So this one has to be true, and if it got added, we should see this in the new record. Oh, we also need the, okay, we definitely need. Okay, so we have both of them set up. Stalk repo dot find one. The option is going to be by, let's say, stalker. Stalker is going to be our stalker, and stalked at is going to be stalking. Okay. Expect found to be defined, and then expect, बस इतना ही तो है. Okay, इतना टेस्ट कर लेता हूँ. Object is equality true, received null. हाँ, stalk कुछ error throw किया. अच्छा, error at stalk. Type error cannot read property of null. Stalking count. Stalking count कहाँ पे है? Stack तो दिखा भाई. Stack trace है क्या? Stalking count.
Result of existing count is user ID. Find one जैसा user ID रखा. हम्म. अरे इसको तो क्लियर ही नहीं किया हमने. Stalker count, stalking count. अच्छा देखता हूँ stalker count, stalking count. अच्छा create the whole at least. Stalker, stalking at here. Okay. Hmm. After all करना होगा. यही Okay, let's get rid of this record manually. Add add तो हो रहा है बस बकचोदी कर रहा है थोड़ा stacking stack count undefined. Hmm, let's see. काम कर रहा है. तुम्हारा कर रहा है ना? Nice. हम्म. मेरा mm, cannot read property of stalking 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 count. एक एक्सेप्शन लगा देता हूँ इधर पे. एक चीज अच्छा लगा नहीं, इधर पे लॉक दिखता नहीं है. उधर टेस्ट जब करते हैं ना, लॉक दिखाता नहीं है साले लोग. क्या करने वाला था? आई थिंक हमने लॉगर लेवल लगाया नहीं. Maybe that's the reason. I'm not sure, but I'm just guessing. So let's attach a logger and see how things go. ना इधर पे तो है ही नहीं. Okay. Object is quality. Huh. Q. What's wrong with this function? Let's see. So हम find one कर रहे हैं by user ID. So this doesn't exist. So this one should. So we're creating a new record if it doesn't exist. Okay, sounds reasonable. अच्छा भाई क्या रिटार्डेड हो, क्या रिटार्डेड हो. Oh my gosh.
gosh. You serious? Oh my gosh, man. थप्पड़ खाएगा ये. A silly mistake. Hmm, please work. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Stalker. Wait, what the fuck? Stalker stalking. Stalker. भाई टेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है वे. ये सिली सिली मिस्टेक्स है ना पूरा दिख जाता है. हम्म, ओके स्टॉकर बोले. इंक्रीमेंट स्टॉकिंग किसका स्टॉक कर रहा है. इंक्रीमेंट कर दो. Stalked ID by. Okay, let's run this. We should have a new record. Also, I gotta change the names of the users so that it's a bit more dynamic. Yeah. User one, user two. Okay. नहीं. Fuck you. Fail हो जाएगा. हाँ, काम तो कर रहा है. तो फिर तो तुम अभी ऑर्केस्ट्रेटर पे काम कर सकती हो. तुम्हारा पूरा फिनिश हो गया ना ये. हाँ होपफुली. Okay, then you can work on the orchestrator. एक मॉड्यूल बना दो orchestrator करके या फिर कमांडर. both are fine. मैं थोड़ा पानी लेके आता हूँ. ना 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 ना. ये खुद का टेस्ट लिखना क्या पेन इन द एस है. और तुम अप्रूवल मॉडल लिख रहे हो क्या? हाँ, खत्म हो गया वैसे बट जस्ट टेस्टिंग थिंग्स आउट. ऑर्केस्ट्रेटेड सर्विस फॉर इसके लिए पोस्ट हैंडलिंग. क्या किसका बात कर रहे हो. समझा भी नहीं मैं. ऑर्केस्ट्रेटर वो टास्क डाल रहा हूँ मैं. ओह अच्छा अच्छा. ट्विटर हाँ. Let me see if this is this should तुम तो fail. तुम स्टॉक लिख रहे हो क्या? हाँ, stalk. ये kinda वो है. It doesn't need any orchestrator. Kinda सब इसके अंदर ही हो जाता है. इंडिपेंडेंट है ना. ओए अच्छा, वैसे पोस्ट तो. में अरे ऑर्केस्ट्रेटर यार. क्यों चाहिए? हाँ, नहीं चाहिए तो. लाइक अच्छा. एड यूजर ये सब तो खुद ही कर सकता है ये. हम्म, अच्छा तो फिर हाँ वो कर दे तुम्हारा. मॉड्यूल आ, कंप्लीट कर दो. हाँ मॉड्यूल कंप्लीट कर ले. तो फिर
instead of basic CRUD operations वो कर देना. Mhm. Try to make it make the services have functions that actually is usable, like add post for user ऐसा type का function, edit post for तो user fuck, ऐसा वो करके. तो यूजर और उसके बीच में होना पड़ेगा. यूजर तो हम एक जंक्शन टेबल पे स्टोर करने वाले हैं ना, if I'm not हम्म. mistaken. हम्म. और एक्स के लिए ड्रॉ देख लेता हूँ, मैं भूल गया फिर से. हाँ उसका तो यूजर को तो वो करना पड़ेगा फिर. पोस्ट है ना. हम्म. पोस्ट आईडी कंटेंट एंड डेट डेट टाइम. टाइम इंडिपेंडेंट है. देन यूजर एंड आईडी तो वो लोग पास करने वाला है. यूजर आईडी एंड पोस्ट आईडी. हाँ, यूजर आईडी तो वो लोग जब तो फंक्शन कॉल इसके करेगा. लिए एक ऑर्केस्ट्रेटर सर्विस चाहिए ना. आई थिंक उसके बिना हो जाएगा, because although it has user ID, it doesn't really interact with user ID. समझ में आया ना? It just makes use of the user ID to store data, but it doesn't actually interact with user ID at all. वाह. तो मुझे हाँ, तब तो फिर just तो आई डोंट फिर तो अभी जंक्शन टेबल के लिए तो अप्रूवल वाला मॉड्यूल बनाना पड़ेगा ना पहले. I think orchestrator is हाँ. अच्छा, तुम approval, right? Approval, I हम्म. think that's gonna be a sub module of this one, the posts. अच्छा अच्छा. I think because हम different approval table रखने वाले हैं, comments के लिए separate and then इसके लिए separate, posts के लिए. हाँ, तो फिर yeah, I guess work on approval module, या फिर थोड़ा तो रेस्ट ले ले, ऑलरेडी एक कर लिया तो फिर वो कल कर करना. लूँ क्या? हाँ, कल भी कर सकते हो, आज एक कर लिया तो ठीक. खत्म. मेरा बस टेस्टिंग बाकी है, देखता हूँ. लाइक खुद ये मैनुअली टेस्ट लिखना क्या पेन इन द एस है. should not हम्म. should fail stalking because uh, as already stalking, बट सीखना पड़ेगा बोल के लिख रहा हूँ. const. अच्छा, पहले तो एक ऐड करना होगा. stock repo dot save, we'll save a new one. It's gonna अप्रूवल be मॉडल. फिर तो वो दोनों को होगा. hmm, अप्रूवल मॉडल. to you. Wow, 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 and the world. Wow, 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 wow. Okay. Okay, इसके बाद क्या करूँ? So now we already have one. We gotta do service dot stalk user one and then user two. Wait, wait, wait. Const result is equals to this. Expect result to be false. Okay. And then apart from this, uh, oh, हमने तो उस टेस्ट नहीं किया. Count repo dot find one, uh, where user ID is going to be user one. Defined and then expect user one dot stalking. Stalker क्या था ना? Stalker. Okay. To be one. Okay. And then same user two करना होगा. User two is the one getting stalked. So
user2 to be defined and user2 dot stalker to be 1. Okay, perfect. But I'm just gonna run this test once more. इतना intricate. Received 1. भाई string बेचता है बोरा कितना पर खाएगा ये. Test fail हुआ just because string 1 value भेजा instead of number वाला. क्या भाई. Fuck. भाई ये टेस्ट दिमाग खराब करते हैं इसलिए. वही. मैं तो सेकंड टेस्ट लिख रहा हूँ. मेरा वो स्टॉकिंग वाला फंक्शन का ही लिख रहा हूँ. ना पेनफुल. ओके, ये इतना तक टेस्ट कर लेता हूँ. हाँ, ओके. Check count test. So for the count test, what we want to do is this stalker repo has been saved. Okay, count test होनी चाहिए ना. Or maybe we can do this counter repo dot find one by user ID. It's gonna be user one. Result is gonna be this. Count to be undefined. Okay. To be undefined again. Okay, let's try it out. Received expected. कहाँ पे? अच्छा. To be null. अच्छा. To be null. Stalking का खत्म हो गया I think. Now क्या है? Stalk. Stop stalking. Oh my gosh. It should stop stalking. Okay, so for this function we gotta stalk first. Service dot stalk user 1, user 2. Oh wait, result is gonna be here, and we expect the stalk result to be true. To be true. Okay, so if they have stalk, then it should be true. If they haven't, then it should fail. We can also add a check for the length and everything, but no, we are not gonna do that. Or maybe we will. I'm not sure. We'll see. Okay. The second is gonna be service dot stop stalking. Stalker is gonna be user one. And it's gonna be user two. And it's gonna be await const stop result. So this is also going to be a boolean and expect stop result to be true. To be true because we stopped stalking, and we can expect the count repo dot find one by, let's just give a user ID. It's going to be user one. Oh wait, user one count is going to be this, and expect user one count to be defined, and expect user one count dot stalking
to be 0. Okay, and let's do the same for user 2. Expect user 2 count to be defined, and then expect user 2 dot stalker dot count, sorry, to be 0 as well. So this one should work. अच्छा, received undefined, कुछ fail हुआ क्या? कहाँ पे? अच्छा, stop टेस्ट result. फेल हो गया क्या? हाँ, एक stop result पे fail हुआ, हाँ stop भाई, पे undefined, received undefined बोले. Why bro? Now tell me why. tell me why. देखना है क्या? देखना है तो मैं स्ट्रीम कर सकता हूँ, तुम्हारा तो हाँ काम खत्म हाँ है ना? हाँ, स्ट्रीम कर दो। हम्म, तुम्हारा खत्म करके मैं भी निकल जाऊंगा फिर। हाँ, ओके, कहाँ गया? कहाँ पे फेल हो रहा था मैं भूल गया. So we are stalking somebody. This should be true, and then stop stalking. We expect the result to be true, but it's undefined. What does it mean तुम by स्ट्रीम कर undefined? रहे हो क्या? हाँ, दिख दिख रहा है क्या? नहीं नहीं, मतलब वो ओह ट्विच हाँ, पे। ट्विच पे तो नहीं, आई डोंट नो कहाँ पे स्ट्रीम किया. जो लॉग्ड इन द था ऐसे ही फक। घुसा दिया. ओह, मेरा प्राइवेट अकाउंट पे. ये मिलेगा नहीं. Okay, so stopped needs to be true. Stop stalking, right? So let's see what's happening this time. ये debug दिखता नहीं है इधर पे, इसलिए मुझे गुस्सा आता है. ये debug है ना, कुछ दिखाता नहीं है. I wanted to see like the debug. ये टेस्ट का। हम्म बहुत हार्ड हो जाता है. ओके, इसके बिना ही कर लेता हूँ. Well, is stalking. मैं तो ये यूज कर रहा हूँ इंटरनली. आई थिंक इसको पहले टेस्ट करना होगा. इस स्टॉकिंग को टेस्ट कर लेता हूँ. Should stalk it. Is stalking should return false async. Mm, okay, so we already know that await service dot stalk works. User one, user two. Okay, so this is gonna set them to stalking state, so they're gonna be stalking. But after stalking, what are we gonna? अच्छा ना ना, इधर डायरेक्ट टेस्ट कर रहा हूँ. Service dot is stalking user one comma user two, and this one should return false. Expect result to be false, and this one should. अच्छा, ये ठीक है. It is stalking should return true. Async await service dot stalk user one user two await कर रहे हैं, so nah, and we don't need to expect anything. Const result is equals to await service dot is stalking user one and user two. Is user one stalking number user two? Expect the result to be true since they're actually stalking. फिंगर्स क्रॉस। अच्छा, तो फिर इधर पे स्टॉक पे तो काम कर रहा है. स्टॉप स्टॉकिंग इधर पे कुछ बकचोदी हो रहा है. मैं कहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ? नल ना. अच्छा. Oh, fuck off, dude. भाई इतना silly mistake बोले. I think ठीक हो गया.
देखना ऐसे करके स्ट्रिंग के अंदर घुसाना पड़ता है। भाई। हाँ ओके, should stop stalking। अच्छा दूसरा वाला किया नहीं ना, अच्छा ठीक है। It should not stop stalking। ओए ये तो kind of sounds wrong। Can't stop stalking। ये भी sounds wrong। ये 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 कीवर्ड ही थोड़ा वो है, फर्स्ट है। So can't stop stalking because they are not stalking in the first place, right? So service dot stop stalking, ये पहले लिखना चाहिए था मुझे, ये ना थोड़ा ये वो है, simpler है। User to await const result is gonna be this, and we can expect result to be false. Okay, so if I run this, ah, stalking khatam, is stalking test khatam, get stalkers, okay, get stalkers, okay. Now this was the hard one. It should only get stalker count, okay. So I think मतलब कौन कितना लोग stalk कर रहा है इस बंदे को। So to do that, first we have to add a bunch of stalkers. So to do service dot stalk, so let's say user one is stalking user two, and then फिर से करते user three is stalking, user four is stalking, I think user 5 भी दे देते, user 5 is also stalking, okay. oh, so ये सब stall कर रहे हैं। then what is 2 3 4 5, I think इधर पे भी वो करना होगा before वाला, after all we don't need this to be honest, after each चाहिए था, after each delete 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5, okay, since we're adding 5 users we need to make sure that we're deleting all of them. So this is going to add all of then what I want to do is stalker count का I think test किया ही नहीं मैंने, बहुत सारा functions है इधर पे। Okay, what was the testing? Stalker count। Wait service dot stock user one user two. मतलब user one user two को stalk कर रहा Oh, अच्छा अच्छा अच्छा. है। Should only take get stalkers count. So we're adding a bunch of stalkers now. We want to get the service dot get stalker count. Okay, user ID is going to be user two, and then const result is going to be this, and then should get stalker and counts. Okay, and we have the result now. We have to make sure to await this. So now once we have the result, expect result to be defined, defined होना चाहिए, and defined होने के बाद expect result dot stalker क्या था, the fuck, ये कौन सा function use किया मैंने stalker से भाई, हाँ, dot stalkers to be undefined, to be null, I think null है, null है ना इसका get stalkers का return value, हाँ null, and then expect dot count to be कितना stalker है इसका, 1 2 3 4 4 stalkers। oh एक चीज तो ऐड ही नहीं किया हमने, a stalker cannot, sorry, a person cannot follow himself, या वो तो ऐड किया ही नहीं इधर पे। Oh shit. Stalk right, so what we can do is if you stalker dot id is equals to stalker id, this dot lock dot error uh, Oh, can't, logger use कर रहे हो क्या? हाँ इसलिए वो ये तो टेस्ट कर Shit, लेता मुझे हूँ। भी logger use करना पड़ेगा. हाँ उसके लिए तो अच्छा है, बट टेस्ट के पे क्यों नहीं दिखता है पता नहीं। ओके इतना टेस्ट करके देखता हूँ, 1 2 3 4
ओ माय गॉश, सबको ऐड कर रहा है। कौन सा जाने, टाइम आउट हो गया साला। हाँ, add a timeout value to this test, टाइम आउट है क्या कुछ? हम्म, हारो add टाइम a आउट, timeout। टाइम आउट मतलब चाहिए क्या? 5 सेकेंड से ज्यादा लगा बोल के। अच्छा, हाँ, रिड्यूस कर देता हूँ। आई थिंक we'll just add 2, 1 2। ओके, एक्सपेक्ट null to be, ये क्या था? स्टॉकर्स टू बी नल। Undefined, अच्छा undefined है। To be undefined, ये like why do you have undefined and null? एक दे भाई, like null रख या फिर undefined रख। Doesn't make any sense। बेसिकली सेम ही तो है। वही तो। वो क्या रिटार्ड लगता है कभी कभी। दुनिया पे एक भी परफेक्ट लैंग्वेज है नहीं। What the fuck? व्हाट 11 द बोले। फक। What? आई थिंक डेटाबेस थोड़ा खाली कर देता। आई थिंक मैं ठीक से वो नहीं कर रहा, क्लियर नहीं कर रहा। ओह, क्लियर है तो फिर 11 क्यों आया? Okay, let's see. Let's try to understand what's happening. Why is it 11? Get stalkers, right? Get stalkers. Stalkers. Okay. So we are getting, क्या पेजिनेशन नहीं दिया ना मैंने? अच्छा, पेजिनेशन नहीं दिया मतलब ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। So this one, find by one, user ID, stalker count. Why the fuck is the stalker count 11? Ah, स्ट्रिंग जैसा वो हो रहा है। फर्स्ट पे 1 था ना, फिर मैंने हम्म। +1 किया, सो स्ट्रिंग 1 + 1। ओ भाई, ये क्या रिटार्ड। ओ माय गॉश, आर यू शिटिंग मी? आर वो यू करना एक्चुअली पड़ेगा शिटिंग फिर। मी? वही तो। व्हाट द ब्लास्ट। फक भाई। आई डोंट नो, मुझे समझ में कैसा आया। नॉर्मली और आई मैं इधर थिंक पे। अभी तुम्हें ये पूरा को वो करना पड़ेगा फिर से स्ट्रिंग में। हाँ, प्रोबेबली। ओ नो, आई होप नॉट। देखते काम करते हैं क्या। इसलिए लाइक थोड़ा टेस्ट तो अच्छे से लिखना चाहिए। मेरा वाला मैंने बस एक ही यूजर ऐड करके देखा ना, इसलिए हम्म। पता भी नहीं चला। आई थिंक अर्लियर टेस्ट भी फेल हो सकता है अभी तो। अच्छा चलो, एटलीस्ट पास हुआ। I'm just gonna run every test though, to see if things are working. भाई बैकएंड क्या रो रहा होगा अभी। और कॉन्टिन्यूस वो है, डेटा वो कर रहा है। अच्छा, so this is for getting without, अच्छा इसको let कर देता हूँ because we are gonna change the value now। अभी we are gonna do the same, but हम इसके साथ एक दूसरा वो भेजेंगे, skip and limit। Skip is gonna be 0 and limit is gonna be, let's say, 2, just for the sake of this। मतलब we are not gonna skip anything and we are limiting to 2 values। मतलब दो आना चाहिए बस। So expect to be defined, result ये भी defined होना चाहिए, to be defined, and then stalker dot contains, includes user 1, ये true होना चाहिए। Expect to be true, and then same goes for user 3, ये भी true होना चाहिए। The size is still going to be this, and we're gonna do it again, this time limit to 1, so we should only get one user। So defined a duplicate code छोड़, user 1 to be true, and user 3 to be false। वैसे मुझे
पता नहीं कौन सा यूजर आएगा बट स्टिल लेट्स सी. वाओ. कौन सा कौन सा ब्रो मुझे दिखाओ कहाँ पे. अरे वो एक्सपेक्टेड ओ टू. भाई अभी अभी बोले नंबर दे रहा है साला. wait the fuck ये कब नंबर देता है कब वो देता है. दूर बड़ा फनी है. काउंट टू बी टू इधर पे तो काम किया. yo what is wrong with you bro. तुम्हारा वैसे तुमने पुश किया ना. हम्म. अच्छा मेरा तो वो है खुद का ब्रांच पे है वो करना होगा. रिसीव टू ये कौन सा पे है नीचे का ना. अच्छा ओके. हाँ तो फिर ठीक है समझ गया सब काम कर रहा है. सो दिस वन इज फॉर शुड गेट स्टॉकर एंड काउंट्स. तो ये काइंड खत्म ही हो गया इधर पे इधर कुछ है नहीं. शुड गेट गेट स्टॉकर ये क्या था. शुड गेट स्टॉकर्स देता हूँ काउंट्स का डिफरेंट है. गेट स्टॉकिंग गेट स्टॉक. अरे ये स्टॉकर तो बनाया ही नहीं मैंने. अरे नहीं मैं कल कर लूंगा. गेट स्टॉकर फंक्शन बनाया ही नहीं. डू कर देता. गेट स्टॉकिंग है ठीक है बट व्हाट अबाउट गेट स्टॉकर. वो है तो. Damn. ये तो इतना सारा फंक्शन है मैं खुद भूल जाता हूँ क्या क्या हुआ है. should get fuck क्या क्या get stalkers. ओह अच्छा अच्छा get stalking इधर पे है. भाई कॉपी पेस्ट करता हूँ अभी. So we are gonna add this and then let result is going to get stalker. Get stalking करूँगा अभी. Get stalking. Hmm, get stalking. अच्छा user one किसको stalk कर रहा है. user one is user three को भी stalk कर रहा है. So expect result अच्छा to be defined. डायरेक्ट एक बार में टेस्ट कर देता हूँ मैं. limit is gonna be 2 and then skip is gonna be 0. Defined expect result dot count to be क्या था. oh my gosh to be so 2 दोनों को सॉल्व कर रहे. expect result dot क्या था stalking to be defined and then stalking dot includes user 2 to be true and then includes user 3 to be true. That's I think good enough. ये बाद में इवेंट ड्रिवन कर देंगे. यहाँ पे जो हम एक ही फंक्शन पे ये कर रहे हैं ना it's taking way too long. This can be done in the background. It's not an urgent operation, right? There can be a little delay between updating the actual वो count. So वो कर लेंगे. Okay, so ये खत्म हो गया. मैं तो kind of lost हो गया क्या क्या. Stop stalking, get stalkers done, get stalking done, get stalking count and अच्छा और get हाँ ये last function है. It should get stall counts. Okay. So I'm gonna do this again. And I'm also going to add one more record. Let's say user 2 is talking user 3. Right. तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए. X service dot get stalk counts of user 1. Okay. Service. Wait करेंगे इसको. Const result user 1 result.
is equals to this, and then expect user one dot stalker count. इसको कौन स्टॉल कर रहा है to be stalker count. Stalker user one का कोई स्टॉल कर रहा था क्या? Nope. To be zero. Okay. Then let's stalking count. Stalking count to be 2. Good. And then we're gonna copy this and do it for user 2. User 2 stalker count should be 1, and it's what do you call that? User 2. And it's stalking. How many persons it's stalking? Should be 1. Okay. Should work. वैसे इतना टाइम लगना चाहिए क्या Mm, डेटाबेस से आने में? yeah, kinda. तो इसके लिए इसीलिए ही वो करते हैं हम, कैश है ना, कैश यूज हम्म कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड कौन सा वाला, स्टॉकर काउंट टू बी, स्टॉकर का तो आई थिंक भरना चाहिए था, स्टॉकर काउंट should be 1, right? We are stalking this guy, user 2 is stalking user 1. So that means इसका stalker 1 होना चाहिए। नहीं, यूजर वन का स्टॉकर वन होना चाहिए ना। stalker वेट, user 1 को तो कोई stalk नहीं कर रहा, और मतलब यूजर कौन वन कौन। इज स्टॉकिंग यूजर टू, हाँ, तो वन होना चाहिए। हाँ। ये यूजर 2 का ना stalker, हाँ ये हाँ। 1 होना चाहिए, और तो कोई stalk नहीं कर रहा इसको, यूजर 3 हम्म को stalk कर रहा है दो दो लोग। So why is it 0? What the fuck? I think code wrong है, मैं wrong नहीं हो सकता। ओह यूजर 1 का रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम। ओह, व्हाट द यूजर 3 एंड इधर पे वो कर देते, यूजर 3 का टेस्ट कर देते लास्ट। यूजर 3 का थ्री क्या होगा, टू स्टॉलकर होगा। कितना है, 2 टू। स्टॉलकर है इसका, हाँ। एंड देन स्टॉकिंग कितने को स्टॉल कर रहा है, 0। हम्म ओके, लेट्स ट्राई दिस वन आउट। एक तो वो है फ्री वाला यूज कर रहे हैं ना, सो इट्स लाइक फ्री होने से भी इतना तो स्लो नहीं होना चाहिए, मोंगो सुपर फास्ट है, इट्स मोस्टली दिस वन, व्हाट डू यू कॉल दैट, नेटवर्क कौन? लेटेंसी लग रहा है। एंड देन वो सिस्टम है ना, थोड़ा वीक वाला देते हैं हमें, 512 MB रैम वाला। हाँ Plus, हाँ। it's serverless, right? So it shuts हम्म down if it hasn't been used for quite some time, and the next time it boots up, it's gonna take a little longer. So I think it's done. I'm gonna uh, basic tests implemented. Spelling wrong ho, ठीक हो, fuck it. I'm going to create a pull request. I don't know, मैं मुझे उससे करना नहीं आता। अरे रुको रुको रुको, ये तो चेक नहीं किया, डेटाबेस खाली है ना। ओके, खाली है, ये तो हमारा है। मेरा वाला स्टॉक खा दिया क्या? ओह एक है। फक। आई थिंक तुमने वो आफ्टर ऑल या फिर वो दिया नहीं, कोई ना, चल तो रहा है एटलीस्ट। सो गिटहब पे जाके I'm gonna create a pull request, तुम देखना, चेक करना। यू टैग। ओह भाई इसके बारे में 190 वो कितने कॉमिक्स है भाई, मेरा ये खत्म होने वाला, ये साल खत्म होने वाला है। uh, new pull request, I'm gonna go from modules and task to this one, create a pull request, and I'm gonna add a changes, क्या दूँ, first वाला क्या दिया मैंने, खत्म। और तो किया ही नहीं कुछ, देख लेना। I'm gonna शिट। assign you, assign कर अच्छा। सकते हैं इधर पे, नो and कॉन्टेक्स्ट। then and label अच्छा। वो देते हैं, work in progress review का कुछ है क्या, create new label, review, in review,
review and लेवल नहीं है. the fuck review. Okay, and then reviewer किसको दूँ? Focus. Assignee. Oh, assignee तो हम्म, मैंने assign किया था. Never mind. And then milestone नहीं था. And then merge pull request. हाँ, I think वो होगा. अच्छा मैं कुछ तो मर्ज कर देता हूँ. मर्ज नहीं, ऐसे ही चेक कर लेना पहले. फाइल फाइल चेंजेस है ना. और क्या क्या हुआ? हाँ, इधर पे जाके फिर रिव्यू चेंजेस पे जाके अगर कुछ लिखना तो लिख सकते हो एंड देन यू कैन अप्रूव इट और यू कैन रिक्वेस्ट सम चेंजेस इफ यू वांट. डैम. मुझे तो फाइल्स चेंज्ड. मतलब क्या क्या चेंज हुआ वो दिख जाएगा. ओह माय गॉश, ये वाला व्यू खराब है. एक साइड बाय साइड व्यू बेटर लगता है मुझे. इधर पे आई हम्म. थिंक नहीं है. टॉप डीटीओ एट. मुझे तो साला इधर पे कमेंट लिख लिख के देता है वो. जब तुम होवर करते हो ना, एक हम्म. प्लस का साइन है ना साइड पे, हाँ. वो जहाँ जहाँ उससे पे देख सकते. हाँ चेंजेस चाहिए उधर पे लिख देता है. टॉकर स्टॉप्ड एट. स्टॉक टैड बोले दूर भाई. स्टॉप स्टॉकिंग. सकते हो बाकी तो ठीक है. एंटिटीज. टेस्ट ऑटो लोड एंटिटीज. वाओ वाओ वाओ. रिक्वेस्ट हाँ, तुम वो करने से कुछ कमेंट ये सब अगर कुछ रिक्वेस्ट चेंजेस करते हो ना तो फिर हम्म. मैं फिर से चेंजेस करने के बाद वो कर सकता हूँ रिक्वेस्ट रिव्यू करके. और मस्त तो है. अच्छा वैसे आई डोंट थिंक कुछ वो हो रहा है. अच्छा फिर अप्रूव कन करके वो कर देना, मर्ज कर देना. अरे बिना अप्रूव करके कर देता हूँ. सेकंड. मर्ज पुल रिक्वेस्ट. Whoa, 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 whoa. आई थिंक हो गया. Damn. Oh yeah. कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ क्या? नहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ. Damn. इतना इतना इंडिपेंडेंटली काम किया. Merge pull request from modules task, basic test implemented. Merge brand, post model complete. अच्छा, टास्क डैम हो गया तो. अच्छा उह, मेरा मेरा हाँ. भी मर्ज हुआ था वो. क्या बोलते हैं? ट्रैकिंग ब्रांच से. इधर पे वो इधर पे दिखाता नहीं है शायद. वो तुम्हारा आईडी किसका? पेजेस से जो दिखाता है पूरा बहुत और सारा दिखाते ब्रांचेस तो करके. कहाँ पे? ये इनसाइट्स में जाओ. हाँ. फिर इनसाइट्स में जाके. कॉमेट्स. नहीं नहीं वो क्या था? नेटवर्क था शायद. अच्छा. ओ माय गॉड. अच्छा डैम मस्त है. तो जूम कर सकते हैं क्या? अनफॉर्चुनेट. हाँ इधर पे कर दिया. डैम. हम्म. ब्लू मतलब मैं और ये मतलब तुम ना. आई सी नहीं वो फिक्स द टाइपो. डिपेंड करता है. वो वाइट वाला मेन ब्रांच. मास्टर हाँ ब्रांच. अच्छा 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 अच्छा. बाकी सब वो ट्रैकिंग ब्रांच. तो फिर ये मैंने दूसरा ब्रांच. अच्छा. रिफैक्टर नेम से फैक्टर. डैम. ओ अच्छा हाँ इधर पे तुम्हारा वो. हम्म. भाई क्या भाई मस्त ये दिखता जब है रे. ये ये क्या हुआ भाई? ये क्या हुआ? देख रहा इधर पे आता है इधर पे आता है. ओ माय गॉश. क्या डेंजर लग रहा है ये. मर्ज पूल कर दिया.
बेसिक टेस्ट इम्प्लीमेंटेड मस्त है बे नेटवर्क ग्राफ। और ये हमारा वो शायद कॉमिक्स कितना किया मंडे को सर 0 कमेंट्स। कल कल और अच्छा नहीं नहीं, बस दिन तो था 7 कॉमिक्स। इतना कम कॉमिक्स करते हैं क्या इधर पे आई थिंक वो फक कम बोलने वाला था बट नेवर माइंड। काइंड ऑफ फास्ट तो हो रहा है प्रोग्रेस इन जीएल। हम्म। अटकने वाले फ्रंट एंड पे। कोर्स। ओ माय गॉश उधर पे मुझे वैसे बैच मिल गया अभी मिला अभी। ओ ये क्या है? गिटियम क्लोज विद इन ओ क्या है ये? ओ ये मुझे भी चाहिए। ये क्या है और मर्च वो करने के लिए? ये क्या अच्छा था? अच्छा, पुल रिक्वेस्ट आई थिंक 5 मिनट्स के अंदर वो क्लोज हो जाने से। ओ डैम। ओए हमें पुल बुलशिट। रिक्वेस्ट करना होगा यहाँ पे आ, आएगा सुंदर करके टोटल वही वही। पीआरस पे कंट्रीब्यूशन पे तो है नहीं, तुम्हारा है क्या? तुम्हारा तो मेरा भी होना नहीं है। चाहिए ओ मेरा भी होगा शायद, मेरा होना चाहिए। बिकॉज तुम ये हाँ। एनोनिमाक्स पे कर रहे हो ना, so I think हम्म। it should work. एक सेकंड वो, मुझे वो चाहिए थोड़ा, इसका टेम्पलेट क्या था? ये गिटहब स्टेटस कैसे जानी डालता था? हम्म, गिटहब स्टेटस हाँ। कौन सा वाला था? गिटहब स्टेट्स। हाँ गिटहब स्टैट्स। प्रोफाइल इतनी चेंज करता हूँ। भाई 534 पे क्या कर रहे? कंट्रीब्यूटेड लास्ट ईयर 2 है बस, व्हाट द फक। हम्म। अच्छा तो फिर कल मेरा ये तो हो गया फॉलोइंग फॉलोअर्स। व्हाट हाँ एल्स इज किया अभी, लेफ्ट? चेंज किया। क्या वो हम्म। क्लिकअप पे? नहीं नहीं नहीं, गिटहब वाला। हाँ, कैसे कैसे क्या चेंज किया? और मैंने वो ऐड किया की। और तुम्हारा वो स्टेटस जो दिखता हाँ। है। एक पता नहीं क्या कर रहा है अभी एंड्रीन। हाँ मोस्ट लैंग्वेज भाई अभी भी सी प्लस प्लस है बोले। ये टाइपस्क्रिप्ट कैसे? इधर पे क्यों है इतना करने के बाद भी? जावा कैसे ज्यादा है इससे? वही तो क्या किया जावा, बस जावा व्हाट द फक। और नहीं जावा से दिखता। क्या किया? टोटल पीआरस डैम 140 हुआ फिर भी। अच्छा ये इसको चेंज कर दे। और तुमने यूजर पे दिया था ना रिटमी? क्या? हाँ, हाँ। वो भी ऐड कर देना रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन वाला इधर पे। ओ हाँ हाँ हाँ, वो मैंने भूल गया था। core components GTOs exceptions organized into modular deploy structure अरे बाप रे आई थिंक डॉक तुम्हें ही लिखाऊंगा मेरा इतना वो नहीं है, क्या बोलो ब्रेन जूस रहता नहीं है। APIs user service class। purpose ये तो DTOs। ऐसे। हाँ exceptions, हम exceptions थ्रो कर रहे थे क्या? मैं तो भूल गया। हाँ, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। हाँ
पर्पस और सब मॉड्यूल। ओ डैम, यहाँ पे तुम वो भी वो भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ओ ऑथ का फ्लो, लॉगिन प्रोसेस कैसा होता है ये सब करके। ओ हाँ। लाइक तुम्हारा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म कैसे काम करता है ये सब एक्सप्लेन कर सकते हो। पर्पस, JDBD क्लास, TTOs, इंटरफेस, हाँ अच्छा तो है डैम। इतना इतना लिख लिया क्या? ये उसमें लिखा था तो क्लिकअप का विकी में, तो इसको हाँ। एक्सपोर्ट किया उधर, और भी कलर वलर देके लिखा था, फिर यहाँ पे कलर चला गया। अरे हाँ। ना तो फिर कल तुम्हारा बेसिक पोस्ट CRUD ऑपरेशन हो गया ना? अभी अप्रूवल, पोस्ट अप्रूवल, अप्रूवल आई थिंक खुद का मॉड्यूल अप्रूवल, होगा। हाँ खुद का तो नहीं, उसका ही होगा, बट you might have to work on the auth and the junction table simultaneously. Junction table तो उसका पार्ट ही होगा, क्या बोलो, पोस्ट का पार्ट, ठीक है। हम्म। पोस्ट मॉड्यूल है ना, उसका पार्ट ही होगा। अच्छा। I think you might have to first work on this one. What do you call जंक्शन that? टेबल। Yeah, because approval पे तो वो होगा ना, like वाइक करने से काउंट स्टोर करने के लिए तो जंक्शन टेबल एग्जिस्ट करना होगा हम्म। based on this one. Like अगर ये तो यहाँ पे काउंट स्टोर कर रहे हैं ना, हम्म। so if this junction table doesn't exist, we cannot make we cannot create this module. So I think first we'll have to create the user post module, या फिर कुछ और नाम भी दे सकते हैं, तुम्हारा मर्जी। बट हाँ, आई थिंक टुमारो ये करना होगा। एंड देन दिस, इधर पे भाई बहुत वो लगेगा, बहुत सारा फंक्शंस आने वाला हेडेक शुरू होने वाला है। है। मेरा ओ ये साला, ये भी तो क्या पेनफुल था, क्या हो किधर गया। ये सर्विस का इम्प्लीमेंटेशन कुछ ज्यादा ही लाइक वो है। एक दिखा देता हूँ, स्टॉक वाला। पहले तो अच्छा, कैनॉट स्टॉक योरसेल्फ, हाँ ये तो ठीक है, ठीक है। फिर हम्म। स्टॉकिंग ये सब तो चेक बेसिक्स है। फिर स्टॉकिंग करते हैं ना, इसके बाद स्टॉकर वो है ना, इंक्रीमेंट हाँ करते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वो सब करना होता है। फिर इन सब पे भी लाइक वो है, पेन इन द एस था थोड़ा, बट चलता है। फिर कल तुम आई जंक्शन पोस्ट टेबल। हाँ। पोस्ट तो लिटरली यूजर जैसा है, बट उससे आसान था। हाँ, बस अभी कल तुम्हारा असली पेन वाला शुरू होगा। दो तीन एक साथ काम करेगा ना अभी। हम्म। इसलिए हाँ अच्छा ही है, सीख भी लोगे, फिर करते करते एकदम फास्ट हो जाओगे। कल मैं क्या करूं, तुम ये करने वाले हो तो आई माइट ट्राई कमेंट्स में, कमेंट्स का देखता हूँ। कमेंट्स तो पोस्ट, हमारा अभी तक के लिए तो पोस्ट होगा ना बस। कमेंट्स आर गोना हम्म। बी ओनली इन पोस्ट्स। मे बी फ्यूचर पे भी यही रखेंगे। अगर कुछ और चाहिए तो स्पेसिफिकली उस आइटम के लिए कमेंट्स करके स्टोर कर देंगे, so that it's easier. So I हम्म। work on comments, you work on this auth, तो फिर तो I think that's the main features done, right? या The fuck, oh, अच्छा फिर हाँ एंड पॉइंट बना के वो करना होगा। इतना जल्दी क्यों हो रहा है ये, थोड़ा वो लग रहा है, डर लग रहा है, इतना जल्दी तो होना नहीं चाहिए था। आई थिंक सिक्योरिटी इश्यूज बहुत आने वाले हैं। आई था, मुझे लग रहा है जब एंड पॉइंट बनाएंगे थोड़ा, ओ अच्छा अच्छा सर्च फीचर, तो हाँ सर्च पे थोड़ा टाइम लगेगा। ओ हाँ, हम्म, फिर रिकमेंडेशंस पोस्ट का। हाँ वो तो एकदम लास्ट पे कहाँ पे गया वो, देख सकते थे ना, तुमने कुछ दिया था तो। और क्या डॉक्स, दिया हाँ था? डॉक्स पे देख लेता हूँ। यूजर ये तो लॉगिन, तुमने लिखा था। हाँ यूजर, ओ ये वाला, ये तो ज्यादा हार्ड होगा नहीं, बट या ये होगा।
then you can share your UID. UID basically वही है email. Yes, email. email हमारे लिए posts या almost done, comments कल करेंगे, following followers done kinda, searching oh बस इतना ही तो बाकी है. Damn. End game. Damn. Oh, होने वाला है इतना जल्दी, तो फिर वो कर लेंगे, फिर फ्रंट एंड पे थोड़ा अच्छे से कर लेंगे, ताकि लाइक बैक एंड अच्छा होने से भी अगर फ्रंट एंड शिट हुआ ना तो लोग बहुत वो करते हैं, शिट complain शिट करेगा. बोलेगा, हाँ कंप्लेन करेगा, इसलिए इसको भी करेंगे, और हमारा फ्रंट एंड भी तो काइंड ऑफ बैक एंड ही होगा, फ्रंट एंड का बैक एंड है खुद का, वो है वो ना, सर्वर साइड GraphQL. रेंडरिंग. हाँ. सर्वर साइड रेंडरिंग, हाँ. लाइक मेरा वो एस्ट्रो का प्रोजेक्ट है ना, यूटेक का, हम्म उधर पे भी ऐसा है, तो मैं दिखाता हूँ. हम्म, ताकि लोग शिटी डिवाइस लेके भी हम लोग का एंजॉय हाँ कर पाए. वही, नहीं तो भाई फ्लटर जैसा वो लेगा 10 सेकेंड्स जस्ट फॉर द मेन भाई. पेज टू लोड, क्या annoying लगता है. एस्ट्रो आई थिंक ये हम्म है. इसको इतना रिफैक्टर किया, लाइक कोड फीचर्स कम है बट 180 प्लस कॉमिट्स है, इतना रिफैक्टर बस किया. इसका. हाँ. किधर भाई. गया, मिडलवेयर सर्विस पे था ना, पेजेस एपीआई, हाँ ये सब देख, लाइक ये वो कर रहा है, इट्स लाइक दिस वन. रुक इधर दिखाता हूँ, रिडायरेक्ट. और ये वाला देख, ये बैकएंड को कॉल कर रहा है, बैकएंड इन द सेंस दिस बैकएंड. ये कितना कंफ्यूजिंग है, ये है फ्रंट एंड का कोड एंड एट द सेम टाइम बैकएंड भी यहाँ पर ही है, तो कंफ्यूजिंग लगा था पहले पहले. ये बहुत ऐसा टाइप का कोडिंग बहुत पहले किया था, वो जावा सर्वलेट होता है ना, जेएसपी हम्म सर्वलेट्स तब किया था, तो जब इस बार फिर से किया, पूरा दिमाग पे कुछ घुस नहीं रहा था. और अगर ये अच्छा हुआ ना तो मैं वो कर दूंगा, अमेजोन पे थोड़ा होस्ट कर दूंगा, अच्छा वाला वो लेके, लाइक नॉट एक्सपेंसिव बट डिसेंट इनफ, वो लेके पर मंथ शायद 200 ऐसा टाइप का, ताकि वो कर पाऊँ, थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा होने के लिए. तो पहले एडवर्टाइज करना पड़ेगा. हाँ वो तो करूँगा, बट मेनली वही, जस्ट टू लाइक हैव समथिंग दैट वर्क्स डिप्लॉयड ऑन द इंटरनेट, वो भी अच्छे से ब्रोकन वाला नहीं. मेरे पास वो तो है, होस्टिंगर का सर्वर है तो, बट आई डोंट नो हाउ टू दिस वन यूज. मैं 7K से खरीदा था, भाई, कितना टाइम के लिए? आई थिंक 6 months या फिर 1 year, मैं भी भूल गया. ऑन Authentication को. होस्ट कर दो. मजा आएगा इंशाल्लाह. इंस्टा बैन. बाय. ओए, कॉर्ड्स बोले, इतना फक कॉर्ड्स क्यों लिखा. फिर बोला. इधर पे मेरा एक मॉम का वो है, तो वेबसाइट होस्टर है, तो ये था या होस्ट. कॉम था मैं भूल गया, डॉट इन वाला था या डॉट कॉम वाला था मैं भूल, ओ यही है, देख लॉगिन करके रखा. न्यू पोस्ट एडिट ये सब कर सकते हैं, ये वो है. ओह हम तो वो भी कर सकते हैं, फ्रंट एंड पे एक यूआई बिल्डर ऐसा टाइप का, ये तो वो है ना, वर्डप्रेस. ओ हाँ. ओ डैम, हाँ. ए, लेकिन रिसर्च वर्डप्रेस करके तो पैसा देखेंगे. लेता है. एक फ्री वाला, हाँ आई थिंक उसके लिए, डोमेन इन सब के लिए, डोमेन तो काइंड चीप ही है. हेलो कुछ बोल रहा हूँ, वेबसाइट्स मेरा, भाई मेरा देखना, डॉट कॉम भी डॉट कॉम भी है. खरीद के रखा, डॉट इन भी खरीद के रखा, इससे अच्छा मैं एक खुद का कुकू करके खरीदने से कितना वो होता, प्रॉफिट होता. दो दो खरीद के रखा है ऐसे ही. डॉट इन का कैसा है? आई मीन डॉट कॉम का. डॉट कॉम का ओह बना है. पूरा डेड है भाई, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, पूरा यूजलेस, लाइक आउटडेटेड फक है ये. ये वो है, ओल्ड वर्जन, बट अच्छा, कितना लॉस आउटडेट. लगता है, हाँ पूरा लॉस लगता है.
बिकॉज ऑलरेडी हमने डॉट इन खरीदा था एंड देन हम्म। ये लोग एक डोमेन फ्री पे देते इफ यू गेट देयर सर्वर्स। मुझे अच्छा। ये चाहिए था वीपीएस। VPS तो फिर मैं खुद का लाइक कंटेनर होस्ट कर सकता था बट काइंड एक्सपेंसिव। ओ माय गॉश पर मंथ। 389, माय गॉड। और ये भी लाइक पर मंथ। ऑफर पे। हाँ सिर्फ वो नहीं, पर मंथ पे नहीं करना होता, एक साल पे पे करना होता है। ओ भाई। तो बहुत हो जाता है। इससे अच्छा सर्वरलेस, बेस्ट सर्वरलेस। हम इधर पे होस्ट करेंगे कंसोल, फारगेट या फिर लैम्डा। अच्छा। मैंने फिर से अकाउंट बना लिया, पहले वाला आई डोंट नो क्या हुआ। इधर हैविंग ट्रबल साइन इन विद रूट यूजर साइन। अच्छा। भाई मैं ये कॉफी में कोई खरीद के नहीं दिया क्या तुम्हें? नोप, एक भी नहीं दिया इस, साला। इसलिए बंद कर दिया था। वो बंद है क्या मॉड। मेरा? ओ हाँ हाँ हाँ, एक बंदे ने टेक्स्ट तो किया था लाइक वो करने के लिए, लाइक मॉड अपडेट करने से वो करेगा, डोनेट करेगा करके, बट तब थोड़ा मन नहीं था। लैम्डा या फिर वो, ये भी अच्छा है। बट यहाँ पे डायरेक्ट हमारा जो कोड है ना, डिप्लॉय कर हम्म। सकते हैं नोड जेएस इधर पे डायरेक्ट पूरा। जावा जावा तो भाई ट्राई भी मत कर, इतना स्लो है ना स्टार्ट होने में, पूरा इम्पॉसिबल। नोड जेएस अच्छा है, पाइथन भी अच्छा है, ये बाकी का ट्राई नहीं किया। रूबी। ओ रूबी तो भाई इलास्टिक, ये वाला है ऑटो स्केलिंग कुबरनेट्स का, हाँ। मतलब अपने आप अप स्केल डाउन स्केल करेगा। और ये वाला है हमारा वो EC2 यूज करके कंटेनर। कंटेनर टाइप का। प्राइसिंग, फारगेट प्राइसिंग, सब चीज सारा एक्सपेंसिव, बट देख ना कितना वो है, सस्ता है देख। पर आवर था। हाँ फिर भी लाइक हमारा लाइक वो है ना, जितना ऑन रहेगा, एंड लाइक ये तो सर्वरलेस है ना, सो ओ। वो है ऑफ हो जाते हैं अपने आप, कोई यूज ना करने से, तो काइंड ऑफ चीप। और एक चीज से तो लाइक फ्री का वो था, एक थ्रेशोल्ड के अंदर रहने से इट्स फ्री। आई ओ। थिंक 1 मिलियन वो था। अच्छा वो रिक्वेस्ट उसका है, हाँ 1 मिलियन रिक्वेस्ट पर लैम्डा मंथ। का था क्या? हाँ लैम्डा का था, बट अच्छा ही था। अगर लैम्डा पे वो कर पाया ना लॉन्च, तो फिर अच्छा होगा। इधर पे कर तो सकते हैं बट आई डोंट रियली नो हाउ, ट्राई नहीं किया कभी भी कंटेनर पे। इधर पे डॉट देख, नेट कोर। कंटेनर इमेज करके आई थिंक हमें अपलोड करना होगा हमारा इमेज, एंड देन वी कैन लाइक डॉकर। डू इट। डॉकर हाँ से। वही डॉकर से, हाँ एग्जिस्टिंग जो है ये सब यूज करके, बट इधर का रूल्स वूल्स है ना थोड़ा, वो तो है कंफ्यूजिंग। वाह 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 वाह। ठीक है तो फिर तुम भी रेस्ट ले लो, मैं चाहता ठीक हूँ। है। मैं शायद भाई यूटेक पे थोड़ा काम आज कर मैं लूँ मैं बहुत शायद। लेट उठा हूँ। अच्छा नहीं हाँ लगता। सेम, मैं तो वो उधर पे उठता हूँ मैं 12 1 तो को। भाई मेरा मैं तो उठ के फिर से सो जाता हूँ फिर। क्या बोलते हैं, रात हो जाता है। ओ माय गॉश हाँ वही क्या लाइक, टाइम मिलता भी नहीं है तो दोपहर को ज्यादा मूड होता नहीं है। हम्म। फिर मैं उठता हूँ 1 को, तो थोड़ा फ्रेश होके कोडिंग स्टार्ट करता हूँ शायद 2 या फिर 3 मैक्सिमम। फिर 5 तक या 5 या 6 तक, फिर थोड़ा रेस्ट करता हूँ। फिर से आई थिंक 9 या 10 से शुरू करता हूँ। आज तो पूरा फक्ड अप था, पूरा दोपहर टाइम वहाँ पे ही खत्म हो गया। क्या बोलते हैं उसको, एनफोर्स करने के लिए बाउंड्रीज, हुआ भी नहीं। फिर उसके बाद वो एक्चुअल कोडिंग शुरू किया, तो टाइम लगा ना 8 बजे हम्म। तक, फिर तब रेस्ट किया था। तो फिर आज भाई। बहुत जिंग 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 कर रहा है मेरा सर अभी भी, इसलिए सो जाऊंगा आज तो शायद, कोट नहीं करूंगा। और ठीक है जाता हूँ मैं भी।